जय हिंद फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं पे देख सकते हैं आप चोला, चेरिया, पांड्या, सदर्न स्टेट का ये मतलब रूलर है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड जाते हैं, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फ्रेंड। ये स्टेट जो पार होता है, देखिए फ्रेंड, तो स्टेट का नाम बताना है फ्रेंड आपको, कौन स्टेट में स्टेट का क्या नाम है। ये इंडिया एंड श्रीलंका देखिए जो बीच में है, जरूर फ्रेंड आप इसको कमेंट से पुट कीजिएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट were the three main administrative track under the Chola. फैक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शन क्या है इनका। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, द किंग इज द चर्च ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑफिसर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। द चोला एम्पायर वाज स्प्लिट इनटू 9 प्रोविंसेस, each with its own administration. Another name for them was mandalams. Viceroy was the title given to the province's leaders. Viceroy were chosen from the monarch's close family members. चोला का लेकिन लोकल गवर्नमेंट कैसा था फ्रेंड, देखिए तो लोकल गवर्नमेंट जो था एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द सिटीज एंड विलेजेस वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन. द चोला गवर्नमेंट इज extensively described in the Uttaranerar inscription. The most distinctive aspect of the Chola administration structures was village autonomy. देखिए मैं रेवेन्यू देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका। लैंड रेवेन्यू सर्व एज द चोला गवर्नमेंट प्राइमरी सोर्स था उनका ऑफ इनकम. Now land was surveyed correctly. Land were divided into the taxable and non-taxable categories था. The taxable lands जो था had a wide range of graded. This graded led to varying the land revenue. देखिए फ्रेंड्स, किंगशिप कैसा था। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच वाज लेड बाय द किंग. द चोला किंग एंड क्वींस वर रिसीव्ड as a god themselves, and temple housed their idols. The Chola monarch was inherited. The eldest son should be succeeded and monarch to the Chola throne was a rule that the Chola royal family upheld. देखिए मैं नाडु क्या देखिए, one of the important Chola administrator division was नाडु था. नाडु was the democratically elected assemblies. Natars were the names given to the Nadu. The head, the Natavis was the name of the Nadu Council. तो चलिए फ्रेंड जाते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं. Consider the following statement with respect to the association of Southeast Asian nation. ASEAN के बारे में देखिए, the motto of ASEAN is one vision, one identity, one community. ASEAN Coordinating Council oversees the implementation of Asian agreement and decision. Asian Regional Forums is a platform for the dialogues and cooperation on political and security issues among the Asian member countries and their partners. देखिए friends, how many of those statements are correct? Only one, only two, all three, and all the above. तो फ्रेंड्स इसका जो भी डाटा है कमेंट में पुट कीजिएगा फ्रेंड्स. कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. थैंक यू.